Can you see the screen? Ji, sir. Good. Okay. Informational care to LGBTQ parents. Uh, this these letters are actually extending, so it's LGBTQ and now R as well. LGBTQR. These are the letters. And the other day I was just watching something and something popped up. Somebody sent it to me on a group where the Desi mom was asking the Pakistani son, what is LGBT? And he was trying to explain it to her, but of course, he was just trying to connect few other letters, KG. L is London and G is the Queen and something like that. So we are not actually talking about these issues, and this I communicated to earlier as well. Although the classification system is changing and the various Western classification system is accepting that this is something which is there in the people gene, so we cannot change it, but we still have some limitations to it, religious, social, cultural, and other acceptance values. ये एक छोटी सी नज़म कह लें, कभी दिल के अंधे कुएं में पड़ा चीखता है, कभी दौड़ते खून में तैरता डूबता है, कभी हड्डियों की सुरंगों में बत्ती जलाकर यूं ही घूमता है, कभी कान में आके चुपके से कहता है कि तू अब तलक जी रहा है, बड़ा बेहया है, मेरे जिस्म में कौन है ये जो मुझसे खफा है. This is unfortunate that most of the people, and of course in our examination system, and this is what they want to check from a psychiatrist, if they'll be able to understand the misery of family, the misery of the patient, and would be able to inform and move forward with it. Like what I do is that if a patient comes to me for the treatment of anything related to this issue, I always assess them for major psychiatric morbidity. And I try to treat the major psychiatric morbidity like MDD or other stuff. I also provide them, again, psychological help, of course, not directly by me, but people who do that, and refer them there as well. And I keep on reviewing them till the time we come to the conclusion that this is manageable or it's unmanageable. Well, in most of the situation, as far as I remember, everything was manageable. Uh, High comorbidity, especially psychosis, MDD, bipolar, and personality disorders. So we have to treat those things before we reach to the conclusion, well, this is what it is, and it's an inborn thing, and then we have to move forward with it. Same you have to do again in the exam situation. So there are new changes in the family-oriented approach to this category in classification systems. And psychiatry requires us to proactively engage and work with the families with the LGBTQR children and adolescents. This includes providing accurate information on sexual orientation and gender identity for parents and caregivers early in their child's development, engaging, educating, counseling, and making appropriate referrals for the families and the patients. And in particular, helping parents and the care providers who react to their LGBT children with ambivalence and rejection understand how their reaction can contribute to the health risk for their LGBT children. So this nazm that I read earlier, it's mostly the social, cultural, familiar pressures on the individual if he ever explains or expresses himself. Most of the time, people don't express this. And most of the children, of course, they don't want to express it. Although with gestures, postures, dressings, likings, disliking, it's
quite evident to the parents that there is something different in these individuals than what the normal individuals do. Whenever there is a deviation, we always have to check for the mental health issues. But this is one of the definition of mental health, mental disorders, that it's deviant behaviors. Now, these LGBTQR is not considered deviant behavior, but of course, if there is something different, then you should try to assess them. Now, why we have to do this? Overall objective is helping the families to learn to support their LGBT children and to change their value. And we don't want the families or the patients to change their value system or the belief system. And instead, we should aim to meet parents, families, care providers, wherever they are, whatever the alliance we can build up with them, to make sure that we try to help them understand, and their reactions to the situation should be addressed appropriately so that they are able to contribute in the management of the patient or their family person, rather than reacting, disengaging, making them harsh ways and things like that. So in exam situation, if such a station comes in, my, again, 8 minutes, my start will be that, of course, if you want, I can, by the end of the presentation, I will definitely spend 8 minutes talking to some of you, trying to elicit what it is. If you want, I can do it now as well. So one is sexual orientation, a person's emotional, sexual, relational attraction to others. So my orientation is that I like females. My orientation is like I like males. My orientation is I like both males and females. As far as the sex is concerned, well, sexual partnership is concerned. And my orientation is I only like people like myself. Whatever is their orientation and their fixation, or whatever is there, we have to understand that. So what is their orientation? What do they feel like it? And orientation is expressed in relationship to others to meet basic human needs for love, attachment, and intimacy. Thus, a young people can be aware of their sexual orientation as feelings for of an attachment and connection to others before they become sexually active. This is how, which normally helps. Then gender identity, a person's internal sense of being male or female or something else. I'm a male. My orientation is I like females, and my identity is that I am a male. अगेन ये छोटी सी एक दुआ नज़म, ए अल्लाह इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुसवा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे, ये हालत अपनी जो मैंने खुद बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे, मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे. We always in our society, in our culture, in Pakistan, I'm not talking about the Western world, we always feel that this is something wrong with me. It's a sin, it's a guilt, it's a, again, a problem, and I need it to be corrected, and I pray for it. So the intensity and severity of the emotional problem is too much. So first, in a station, I will like to make sure that the parents are able to talk to me openly. I will try to explain it to them that most of the people, normal human individuals in a society, they have sexual orientation, they have gender identity, they have gender expression, the way person expresses their sense of gender identity, like dressing like a female, wearing a makeup, making long nails, trying to make sure that the nails are appropriate, things like that. And then non-conforming or gender variant or transgender. So these definitions I have to communicate to the parents.
before I start talking about anything else. And their family has a critical role in reducing the risk and promoting the well-being. So this will be my second target. First, I would like to talk to the parents about various definitions related to LGBT. Then I will try to talk to them that your involvement, your support, and your help will be beneficial to the outcome of whatever we decide. If they are not there, if they are not willing, if they are criticizing, if they are not helping, then things can go complicated. So we need their help for the well being of a child who is having this kind of a problem, or an adult, of course, whatever is the situation. So this is how I will go for it. So parents and caregivers are perceived as rejecting their LGBT children and who engage in rejecting behaviors. So there are extremes. I have seen one educated family actually came to me with the acceptance that our son is LGBT and we want to support him in whatever way possible. So this is one extreme. Extreme acceptance without understanding is also a problem. And extreme rejection without understanding is also a problem. So my idea would be that I want to see in which, again, grade they are falling into: extreme rejection or extreme acceptance, or in between somewhere. And then I have to start working on it. This is what mostly the idea is. And the idea is to make sure that the family accepts that their child needs help. They have the equal rights to live a good life. They have their hopes, dreams, futures, careers, and all that stuff. And we have to understand that there are cultural, religious, and other social barriers in accepting their identity. But we have to make sure that all the psychiatric mobility and psychiatric problems are addressed. Their identity is clearly demarcated. We are able to reach to the conclusion that this person is having this thing, and then move forward with how to help them in moving forward with the life, rather than criticizing, judging, making sure that the things are complicated. So this is very, very important, right? So these are the few slides. Now, I want to talk about it with somebody, whoever wants to come in to provide the informational care. अच्छा सर, इससे पहले क्वेश्चंस अभी कर सकते हैं? जरूर करें। अच्छा सर, ये एग्जाम सिचुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप प्रिपेयर कर रहे हैं और वहां पे तो ठीक है, लोग इस तरह जैसे आप स्टेशन करा, सॉरी फॉर लेकिन सर प्रैक्टिकली पेशेंट्स होते हैं, वो बेसिकली हमसे ये पूछ रहे होते हैं कि हमारा बेटा ठीक हो जाएगा, मतलब तो इसका हमने क्या जवाब देना है कि ये कोई डिसऑर्डर है ही नहीं जिसे हमने ठीक करना है। आपको सीखना चाहिए किसके साथ गुजारा कैसे करना है, मतलब इसमें हमने क्या स्टांस लेना है? उन्हें कहना है हाँ जी ठीक हो जाएगा, या उन्हें कहना है ये कोई मसला ही नहीं है जिससे ठीक होने की जरूरत है? क्या मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मैंने इसकी शादी करनी है, इसकी तारीख पक्की कर दी है, अगले साल मैं इसकी शादी कर रहा हूँ, क्या ये ठीक हो जाएगा तब तक? So my stand is against you. I don't know. I have no answer to that. I have no answer to what I will be expecting in times to come. But we will try to work through it, and you will be able to understand over the period of time. I won't straight away say no. I won't straight away say that, well, this is practically not possible. I won't straight away say that accept it. I won't say straight away that, well, yes, absolutely, he will be perfectly fine. No. Of course, I have to inculcate the hope in them. And I always tell them that it's a process. We have to process these things over the period of time, and you will be able to understand कि ये ठीक हो जाएगा या नहीं ठीक होगा या इसके साथ क्या होगा.
वो वक्त के साथ आपको पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि चीजें इतनी खराब नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, और उसको हमें कैसे लेकर चलना है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट आई एम डिफीटेड, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट I don't want to make things better for them. Of course, I want things better for the patient. I want things better for the parents as well. But ठीक हो जाएगा का जवाब सिंपल लफ्जों में, चाहे वो रियल लाइफ सिचुएशन है, चाहे वो एग्जाम है, एग्जाम में भी वो आपको इसी तरह फंसाएंगे, क्या ये ठीक हो जाएगा? उसका जवाब सिंपल सा ही है कि जी ठीक हो जाएगा या नहीं ठीक हो जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं आपको सारी मालूमात तफसीलात बताऊंगा। हम इसके इलाज को सिलसिला शुरू करेंगे और वक्त आने के साथ साथ आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि क्या चीजें बेहतर होंगी और क्या नहीं होंगी। लेकिन अभी इस वक्त मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। यू गॉट द आंसर? ठीक है सर, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन इसमें टू ऐड समथिंग कि मैं एक ये पॉइंट बेसिकली क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ आपसे कि हमने ये एक्नॉलेज करना है पेरेंट्स के आगे कि दिस इज अ डिसऑर्डर, क्योंकि अभी तो वेस्ट का सारा फोकस ही इस पे है कि दिस इज नॉट अ डिसऑर्डर, दिस इज समथिंग यू आर बोर्न विद। तो फिर किस चीज का इलाज करना है हमने? पहली चीज फाजिल फिर वही बात कही थी, why we want to say that this, why we want to go against the classification system, or why we want to go against our religious and cultural backgrounds. I don't want to go against any one of them. ये मैं नहीं कह रहा कि मैं उनसे एग्री कर लूं कि जी क्लासिफिकेशन सिस्टम वाले 100% ठीक कह रहे हैं, ना मैं ये कह रहा हूं कि मैं उनसे डिसएग्री करके ये कहूं कि नहीं जो हमारे कल्चर में और रिलीजन में बात इंफॉर्मेशन दी गई है वही 100% करेक्ट है। मैं यहां पे एज अ जज नहीं बैठा हुआ, मैं यहाँ पे एज अ वकील बैठा हुआ हूँ, कोलैबोरेटर बैठा हुआ हूँ, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बैठा हुआ हूँ, जिसको हर तरह से अपने मरीज की हेल्प करनी। सो कमिटमेंट इतनी है कि हम इसके बारे में मैक्सिमम पॉसिबल आपकी मदद करेंगे, और कमिटमेंट इतनी है कि मैं सिंसियरली जो चीजें हो सकती हैं उनको देखूं, साइकाइट्रिक मोबिलिटी को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, आउटकम असेसमेंट्स को, साइकोलॉजिकल हेल्प को, सोशल हेल्प को। कमिटमेंट ये है, कमिटमेंट ये नहीं है कि हाँ जी आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो शोर मचा रहा है कि मैं लड़का हूं और मुझे लड़के पसंद हैं तो मैं इसका भूत उतार दूंगा, नो आई कैन नॉट, I cannot say that. I should not say that. As a psychiatrist, this is not my domain. I am not there to give them sermons. I am there to help them. मैं उनका वकील हूं, मैं मुंसिफ नहीं हूं, जज नहीं हूं। मेरी बात समझ आई है? ठीक है सर, मतलब हमने दोनों तरफ सेफ रखना है अपने आप को। एग्जैक्टली हमें एक न्यूट्रल वे में प्रोसेस करना है ताकि पेरेंट्स और बच्चा दोनों तरफ सेफ रहें, दोनों का आउटकम हेल्दी हो, दोनों का वट एवर इज द आउटकम, बट इट शुड बी अ हेल्दी आउटकम, और उस प्रोसेस में उनकी हेल्प करनी, ना कि उसको कट ऑफ करके खत्म करना। As a professional, this is what my idea is. But yes, it's personal communication, that's a different story. वो जब हम पर्सनली बैठेंगे तो मैं अपनी सारी पर्सनल दास्तानें सुना दूंगा जो मैं डे टू डे लाइफ में पेशेंट्स देखता हूँ और मैं उनका किस सिलसिले में कैसे चलता हूँ। बट प्रोफेशनली मैं यही करता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, और यही बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। मुझे उनसे रिलीजियस गुफ्तगू में बहस नहीं करनी, मुझे उनसे कल्चरल बिलीफ सिस्टम पे बहस नहीं करनी। Somebody was asking something? No? So कौन वॉलंटियर करेगा? मैं उसको 8 मिनट में इंफॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड कर दूं। सर हमने जिसने वॉलंटियर करना है उसने इंफॉर्मेशनल केयर लेनी है
मतलब he will be the parent, he ऑफ or she कोर्स, will be the parent. हाँ। Okay. मैं आपको करने को नहीं कह रहा, मैं बताने को कह रहा हूँ कि मैं आपको बताऊंगा। जी जी, मैं समझ गई हूँ सर, मुझे आ गई है समझ। ठीक है। मैं इम्तिहान नहीं ले रहा, मैं इम्तिहान दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कैंडिडेट हूँ और आप एग्जामिनर हैं, फिर आप मुझे सर आखिर में नंबर दे देना। सर ठीक है, फिर ऐसा रेयर चांस तो नहीं मिलता कभी, तो फिर मैं कर देती हूँ वॉलंटियर। आप कर लें, आप वालदा बन जाएं मरीज ठीक की, है सर। और मैं आपको इंफॉर्मेशनल केयर LGBTQR के ग्रुप की देता हूँ, और ठीक है सर। 8 मिनट मेरे पास होंगे, ठीक है। ठीक है। उस दौरान आप मुझे टोक सकती हैं, रोक सकती हैं, मना कर सकती हैं, काउंटर कर सकती हैं, चैलेंज कर सकती हैं, जो भी आपको लगे। उसी वक्त ब्रेक लगा के मुझे एग्जामिनर की तरह मुझे चैलेंज करें, और एग्जामिनर अम, की तरह मुझे क्रिटिसाइज भी करें। ये क्यों कहा, ऐसे तो नहीं होता, ये क्या कर रहे हो, थिंग्स लाइक दैट। सो जो आप मुनासिब समझें एज एन नास्टी एग्जामिनर आप करें, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसका जवाब दूं। ठीक है सर। ओके, चलें ओके शुरू सर। करें। यस सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर नासिर है। ये कमरा इम्तिहान है। यहाँ मेरे पास कुछ मेरे सीनियर साथी बैठे हुए हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, एग्जामिनर्स हैं, और मुझे आपसे एक चीज़ के बारे में गुफ्तगू करने के लिए कहा गया है। और उसमें मुझे कहा गया है कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि आपके बच्चे को क्या है और हमें आगे कैसे चलना है। सो जैसा कि आप लेकर आए बच्चे को मेरे पास, तो आपके ख्याल में आपके बच्चे को सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है जिसके लिए आप इसको मेरे पास लेके आए? आपको क्या उसका इल्म है जो आप मुझे बता सकें? डॉक्टर साहब, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब आपको पता है हमारा बेटा जो है वो 25 साल का है तकरीबन, और हम चाहते थे कि हम इसकी शादी कर दें। अभी तक तो हमें इस चीज़ का नहीं पता था और ये बहुत ज़्यादा अवॉइड करता था इस तरह के टॉपिक को। लेकिन अब जब इसकी बात पक्की हुई है और शादी की हमने डेट फिक्स कर दी है, 6 महीने के बाद शादी है, तो ये कहता है कि इसको लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि इसको लड़कियों में दिलचस्पी है ही नहीं। ये कहते हैं कि इसे लड़के पसंद हैं। हम तो हैरान हैं, हमने तो ऐसा पहले कभी सुना नहीं। तो बड़े हम परेशान हैं, इसलिए आप लोगों के आपके पास ख्याल आए हैं। में ये बात आपको अभी ही एहसास हुई कि इसका ध्यान लड़कों में ज्यादा है, या इससे पहले भी कभी आपको इसके मुख्तलिफ रवैयों से ये बात महसूस हुई हो कि इसका ध्यान लड़कों में ज्यादा है? जैसे अगर कोई लड़कियों की गैदरिंग हो तो ये उसको अवॉइड करता हो पहले, या ये कोई ऐसी और बात जो आप मुझे बता सकें? डॉक्टर साहब, पहले भी ऐसा होता था, ये लड़कियों को ज़रा अवॉइड ही करता था, लेकिन उसमें हमें यही था कि बड़ा हमारा शरीफ बच्चा, हमें तो कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ। अब वो जब आहिस्ता-आहिस्ता तारीख पास आई है, तो इसने खुलम-खुला कहना शुरू कर दिया है। और पहले भी जब इसकी हमने मंगनी की थी, तो हमें लड़की के पेरेंट्स ने भी कहा था कि हमारी लड़की को कुछ शिकायत हैं, तो हमें यही था कि लड़का शर्माता है, हमें तो नहीं पता था। अब आप बताएँ, अब ये इस तरह की बातें कर रहा है कि मैंने इस लड़की से शादी नहीं करनी और मुझे मेरा कोई दोस्त पसंद है। क्या उस वक्त जब इसकी मंगनी टूटी थी पिछली वाली और लड़की ने कुछ एतराजात का इजहार किया था, उस वक्त आपने इनसे बातचीत करने की कोशिश की? डॉक्टर साहब, हमने कोशिश की थी, लेकिन ये है कि इसने बस वही टाल-मटोल कर दी कि नहीं, लड़की और इसकी आपस में बनी नहीं। तब इसने हमें खुल के नहीं कुछ बताया। अच्छा, देखें मानूर, आप माशाल्लाह आपका बेटा 25 साल का है, और मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त आपको बहुत परेशानी है। इस सिलसिले में मैं आपको कुछ मालूमात फराहम करूंगा, और उसके बाद फिर जो भी आपके सवालात हैं उन सवालात के जवाब भी मैं दे दूंगा। आमतौर पे होता ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जिस तरह भी बनाया है, और मर्द या औरत या मुख्तलिफ कुछ और डिफरेंट चीजें भी होती हैं, वो चीजें उनका इजहार कुछ जगहों पे होता है, कुछ जगहों पे हमें पता नहीं चलता, और इसकी तफसील हमें बाद में पता चलती है। जैसा कि
आपको एकदम एहसास हुआ कि जी आपका बेटा जो है उसको तो लड़कियों में दिलचस्पी ही नहीं है, वो तो मर्दों को पसंद करता है और उसका कोई दोस्त है जिसमें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। डॉक्टर साहब ये चीज तो हमारे मजहब में भी हराम है। सबसे बड़ी तो हमें ये टेंशन है कि हमारी फैमिली में पता चलेगा तो क्या होगा। मैं ये बात बिल्कुल आपकी समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सारी तफसीलात आपको दूं ताकि उसके बाद हम मिल के कुछ इसका ऐसा तरीका सोचें जिससे आप भी कंफर्टेबल हो जाएं और वो भी कंफर्टेबल हो जाए। सो अगर हमें आपको भी कंफर्टेबल करना है, उसको भी कंफर्टेबल करना है, तो उसमें सबसे पहला कदम ये है कि मैं आपको इस चीज के बारे में पूरी तरह तफसील से आगाही फराहम करूं। अगर मैं आपको आगाही फराहम कर दूंगा और फिर भी आपके कुछ सवालात होंगे तो मैं उसका डेफिनेटली आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं, ताकि हम मिलकर इस मसले का हल तलाश करें, वो हल जो उसके लिए भी बेहतर हो और आप लोगों को भी कोई उसमें शर्मिंदगी का एहसास ना हो। ठीक है। सो ठीक पहली है। चीज ये अंडरस्टैंड करें कि जो बात आप मुझे बता रही हैं वो जो भी आपके बेटे ने इस वक्त 25 साल की उम्र में आप बयान की है, इसका डेफिनेटली पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ रहा होगा और उसकी तफसीलात लेना कि ये कब से शुरू हुआ और ये किस तरह इस तक पहुंची बात, यहां तक पहुंची बात, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। सरेदस्त ये कि हर इंसान की कुछ ख्वाहिशात होती हैं। आप माशाल्लाह माँ हैं, आपको अंदाजा है कि इंसान के जज्बात, एहसासात, उसकी जो सेक्स लाइफ है और दूसरों को पसंद नापसंद करने का रवैया है, ये सारा रवैया इंसान के अंदर मौजूद है। ठीक है। और वो बचपन से मौजूद होता है। सो हमें कभी लड़के पसंद हैं, कभी लड़कियां पसंद हैं, कभी हमें दोनों पसंद हैं। हम उसका इजहार मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। हम कपड़े ऐसे पहनते हैं कि लोगों को एहसास हो कि जी ये लड़का है और इसको लड़का पसंद है। कुछ बच्चे भी ऐसी कपड़े पहनते हैं, जेबतन करते हैं जिसमें लगता है कि जैसे वो लड़कियों वाली हरकत करें। इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की बन गए, लेकिन उनको लड़कियों के कपड़े वगैरह चीजें पसंद है। ये इजहार और ये बर्ताव जो है ना, वो आने वाले वक्तों में मजीद खुल के चीजें सामने आती हैं और मजीद चीजों को पता चलता है। सो इस सिलसिले में तफसील से हम आपसे बात फिर करेंगे। लेकिन जब भी कोई शख्स मर्द, औरत या कुछ और होता है तो उसके जो जिस्म के कुछ हिस्से हैं उनको हमें देखना पड़ता है। लाइक उसका उज़्व तनासुल कैसा है, उसका औरतों वाली जगह कैसी है, उसको माहवारी होती है कि नहीं होती, उसको जो सेक्सुअल उसकी अराउजल है, ख्वाहिशात हैं, जिनसी ख्वाहिशात हैं, वो किस किस्म की हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है कि वो बना हुआ अल्लाह ताला की तरफ से मर्द है, वो अल्लाह ताला की तरफ से बनी हुई औरत है या कुछ और है। उसके लिए कुछ टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे, उसके लिए मुआयना भी करना पड़ेगा, उसके बाद उसको डॉक्टर जो है वो देखेंगे, समझेंगे और उसके हिसाब से वो फिर आगे हमें मजीद तफसील देंगे। फिर जब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये शख्स मर्द है या औरत है, या इसको जो सेक्सुअल इसकी पसंद है वो मर्द की है या औरत की है, फिर हम आगे चीजों को प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में सिर्फ एक बात आपको जरूर बता दूं, ये बड़ा सब्र आजमा काम है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन आम तौर पे 3 से 6 माह में हम किसी नतीजे पे पहुंच के आपको और आपकी औलाद को कंफर्टेबल जरूर कर देंगे। अब आप कोई और सवाल पूछना चाहें तो बताइए। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा है कि 5-6 महीने का वक्त लगेगा और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो बस फिर ये शादी कर लेगा उस लड़की से जिससे फाइनल की है? इस सिलसिले में बात फिर हुई है, मैं अभी आपसे कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकता। मैं वक्त के साथ जब मुझे इसकी सारी तफसीलात मालूम हो जाएंगी, इसके जिनसी मुआयने के बाद, इसकी पसंद नापसंद के बाद, इसकी असेसमेंट जो मैंने आपके साथ बैठ के करनी है, इसके साथ करनी है, जब वो सारी तफसीलात मेरे इल्म में आ जाएंगी तो इस चीज पे हम फिर गुफ्तगू कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब ये कोई ज़हनी बीमारी है इसे? घंटी बज गई, मैं 8 मिनट बोल लिया।
सर एक इम्पोर्टेंट सवाल मदर का रह गया है अभी। बताओ, लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड है क्योंकि घंटी बज गई है और मेरा काम खत्म हो गया, मेरा 8 मिनट का स्टेशन पूरा हो गया। हाँ ठीक है सर, आप हाई स्कोर से पास हैं। वो तो इन लोगों ने सारों ने जजमेंट देनी ना कि ये इम्तिहान में ये बोल लेंगे कि नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, सवाल पूछो माँ का। सर मैं वो डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि मेरे बेटे को कोई ज़हनी बीमारी है? क्योंकि हमारे खानदान में तो या इर्द-गिर्द कभी किसी को ऐसा मसला नहीं रहा। हाँ, ये बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जिनका इजहार आमतौर पे लोग नहीं करते। खानदानों में भी ज़हनी बीमारियां भी होती हैं, मसाइल भी होते हैं, लेकिन लोग बताते नहीं हैं। सो ये कहना कि ये हमारे खानदान में कभी ऐसे कोई मसला नहीं था, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये मैं आपको जरूर बता दूं कि इसको अगर ज़हनी बीमारी है, उसका तयन भी हम वक्त के साथ करेंगे, और अगर इसको ज़हनी बीमारी नहीं है तब भी हम वक्त के साथ इसका तयन करेंगे। इस वक्त सरे दस्त मैं आपको ये भी बात नहीं कह सकता जब तक कि मैं तफसील से उसका मुआयना करके अपनी असेसमेंट को कंप्लीट ना कर लूं। तो डॉक्टर साहब उसने आपको कुछ बताया नहीं अभी तक? अभी तक जो मेरी सरसरी तौर पे बात हुई है वो तो आपने मुझे बताया, और थोड़ी देर के लिए मैंने उसको देखा तो मुझे उसने बताया। लेकिन अभी उसकी, मैंने जैसे आपको पहले भी समझाया कि इसकी असेसमेंट सिर्फ 1 महीने में 2 महीने में नहीं, हमें कुछ टेस्ट करवाने हैं, हमें कुछ मुआयना करने हैं, हमें कुछ मुख्तलिफ इसको सवालनामे देने हैं जिसके जवाबात इसने लिखने हैं, ताकि हम इसकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट करें, इसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग की असेसमेंट करें, इसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की असेसमेंट करें। उसके बाद ही हम आगे चल पाएंगे। अभी पहली एक गुफ्तगू में तो सारा कुछ मसला हल नहीं हो जाएगा। अच्छा मैं डॉक्टर बार बार साहब, आपको यही बता रहा हूँ, वक्त दीजिएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। मेरा एक सवाल और है। अच्छा, और हमें इसे किसी और डॉक्टर को भी चेक करवाने की ज़रूरत है? उसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अगर उसको किसी भी डॉक्टर के पास भेजने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको इसके साथ साथ बताऊंगा कि जी आप इस डॉक्टर के पास ले जाएं, इस साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, वो मैं आपको बिल्कुल तफसील से, जैसे जितना भी हो सकेगा मैं आपको वो तफसील देता रहूंगा। तो आप इसे दाखिल करेंगे कि आप हमें हर हफ्ते बुलाएंगे? नहीं, दाखिले की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सब्र, हौसले, तहम्मुल से चलना है, गुस्सा नहीं खाना, बहुत ज्यादा लोगों से डिस्कशन नहीं करनी, गूगल पे सर्च करके मिस इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी। आपको जो भी सवालात पूछने हो मैं हाजिर हूं, आप मुझसे सवाल पूछें, मैं आपको उसका रैशनल साइंटिफिक जवाब दूंगा और उसके हिसाब से चलेंगे। दाखिले की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ओके। किसी और का कोई और सवाल, किसी और माँ का या बाप का कोई और सवाल? जी महविश। जी सर में दो सवाल है। आपका सवाल है कि एक बाप ये का कि सवाल? माँ का सर। ओके, बोलो। सर ये सवाल है कि हमसे ऐसे क्या गलती हो गई, क्या हमारी तरबियत में कोई कमी थी जो इस तरह से हुआ, क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते थे? देखिए, और सर दूसरा ये कि क्या इनको उनके बहन भाइयों से अलग रखा जाएगा, उन पे तो इन्फ्लुएंस नहीं होगा? पहली बात का जवाब मैं आपको ये दे दूं कि देखें, हमसे गलतियां, हम इंसान हैं, गलतियां हमसे सरजद होती हैं। जो वालिदैन अपनी औलादों की बेहतरीन परवरिश भी करते हैं उनमें भी कुछ मसाइल रह जाते हैं। ये दुनिया इसी तरह से है और इसी तरह चल रही है। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपसे कोई गलती हुई, सरजर्द हुई जिसकी वजह से आपको ये देखना पड़ रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपने ऐसी बात की जिसको आपको नहीं महसूस करना चाहिए था। सो जब, जैसे कि शुरू में आपने बताया कि इसकी पहली मंगनी टूटी और उसने, लड़की ने कोई एतराजात किए, तो आपको उसी वक्त चाहिए था। अब ये 3 साल पुरानी बात हो गई आपके बकौल, तो इन 3 साल पहले ही आप आ जाते तो जो काम हम आज कर रहे हैं वो हम 3 साल पहले शुरू कर देते तो वो बेहतर हो जाता। दूसरा सवाल आपका क्या था? सॉरी महवेश, पहला सवाल मैं रजिस्टर किया, दूसरा रजिस्टर नहीं किया। सर
दूसरा हाँ। क्वेश्चन ये था उनका कि क्या हम अपने बाकी बच्चों को इनसे दूर रखें कि उनका इन्फ्लुएंस ना, उन पे इनका इन्फ्लुएंस ना हो? जितना ज्यादा आप अपनी औलाद को आम रविश से हटाएंगे, उतना ज्यादा मसाइल आपके लिए और उसके लिए बढ़ेंगे। अगर वो घर वालों के साथ उसी तरह खाना पीना उठना बैठना मिलना जुलना करता रहे तो इसमें ज्यादा बेहतरी नजर आएगी। हमारी काविशें सूदमंद होंगी बजाय इसके कि हम फेलियर की तरफ जाएं। अगर हम फेलियर की तरफ जाएं तो उनमें जो चीजें शामिल होंगी उनमें से एक इसको अलहदा तन्हा और सेपरेट कर देना होगा। सो खुदारा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ना इस बच्चे को बाकियों से अलहदा करें। अब 25 साल आपने इसको देखा है, इसके बहन भाइयों ने इसको देखा है, इस वक्त इसको आप अलहदा करके तन्हा छोड़ देंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। इसको नॉर्मल रखें, इसका इजहार बेशक आप किसी से ना करें, लेकिन इसको बच्चे को आपकी निगहदाश्त की, सपोर्ट की, हेल्प की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। हो गया जवाब? जी सर, थैंक यू। किसी और माँ का या बाप का सवाल? 8 मिनट का स्टेशन हो जाएगा अब। सर आपको सुन के तो लग रहा है हो जाएगा, जब खुद करेंगे तो फिर पता नहीं। कोशिश करो हाँ। अपने अल्फाज को ध्यान से चूज करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके इसी तरह बोलें, और ये डिविएंट सवाल आएंगे उनको हैंडल करें, उस पर कंफ्यूज ना हो और उस पर क्रिटिसाइज ना करें, अपना टेम्पर लूज ना करें, एंजाइटी का इजहार ना करें, रिलैक्स होके उनके सवालात का जवाब दें, एग्जामिनर्स के सवालात का। that won't be a problem. ठीक सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम ओके सलाम सर। जी। सर मैं डॉक्टर बिलाल बात कर रहा हूँ। I have recently passed my CPS2 examination in December 2023. So one question that arises in my mind regarding today's topic is that nowadays I'm practicing in a private clinic with a senior professor, Dr. Zafar Heather. So I write histories for him when the patient came into his OPD. So I've encountered a case where a female patient came into the OPD uh, and she was dressed like a boy. So when I discussed with Professor Zafar Haider regarding the treatment of this scenario, or regarding this case, he told me that such patients should be advised to spend at least 2 years uh, in the gender that they have they are racing, like the female which came to me, she was wearing boys clothes. So he told me that 2 year time should be given to her to live in a society as a boy or as a male. So my question is that how can one counsel the family regarding this treatment option? Is it feasible, or there are some alternative ways to tackle this problem? ओके, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी थ्योरी पास हो गई, अब वाया में आप जाएंगे, मुबारक हो आपको। दूसरी बात वाइवा भी हो चुका है सर, वाइवा भी हो चुका है। वाइवा भी हो गया है, पास कर लिया है, वेरी गुड। इसमें छोटी सी चीज बता दूं डॉक्टर साहब, जरूरी बात, पहला जरूरी स्टेप कि अभी जो हम कर रहे थे वो इंफॉर्मेशनल केयर कर रहे थे टू द पेरेंट्स, वी नेवर वेंट फॉर द ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज। और जैसा कि मेरे अगेन साथी ने बताया मुझे कि ये प्रेजेंटेशन आप पहले भी कर चुके हैं, वो तफसीली प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ दीज
is there on the YouTube, you can watch it. Yes, उसमें हम 2 से 3 साल का टाइम पीरियड साइकियाट्रिस्ट देते हैं टू एंगेज द पर्सन. उसमें सिर्फ कपड़े नहीं पहनाने कि दूसरे कपड़े पहना के 2 साल तक घुमाएं उसको, नहीं. उसमें स्टेप वाइज चीजें होती हैं कि पहला स्टेप ये होता है कि उनको अंडरस्टैंड करवाएं, फिर उनको उनकी फिजिकल और सर्जिकल ओपिनियन लें, फिर उसके बाद उनको काउंसलिंग के लिए रिकमेंड करें. और इस दौरान one of the component, not all the component, one of the component is yes कि आप पेरेंट्स को और पेशेंट को एंगेज करते हैं इस बात पे कि आप 2 साल दूसरी जेंडर के रोल को अडेप्ट करके उस पे चलें. उसमें सिर्फ कपड़ों का जिक्र नहीं है, उसमें जेंडर रोल पूरा शामिल है. उसमें कपड़े भी हैं, काम भी है. सो अगर वो लड़के वाले उसने कपड़े पहने हुए, एंड आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ दीज गर्ल्स हु वांट अगेन टू बी मैन, they already are actually performing lots of things which males do, except for some nitty-gritty things. So वो psychological steps का एक step है, सिर्फ अकेला step नहीं है कि कपड़े पहना देंगे 2 साल के लिए तो वो चल पड़ेगा, नहीं. उसमें जब आप पहला प्रोसेस कर लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, एवेल्युएशन, हार्मोन लेवल्स, फिर सेकंड स्टेप आता है कि आप उसको एंगेज करते हैं साइकोलॉजिकल हेल्प में, थर्ड स्टेप आता है कि उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, और फोर्थ स्टेप आता है कि आपको उसकी सर्जिकल इंटरवेंशन करनी होती है. सो इस सारे टाइम पीरियड में 3 साल दरकार है. Thank you, sir. You're welcome. Any other question? Good. So I believe that you will be able to perform this station nicely and wisely. If there'll be anything else for me, let me know. कोई और स्टेशन करना हो तो मेरे पास अगला जुमा भी है. 3 नवंबर के बाद मैं लाहौर में फेस टू फेस एक एकेडमिक एक्टिविटी FCPS पार्ट 2 वालों के लिए फिर करूंगा लाइव in person, alive in person, Kumanur, live in person, and of course, if there be, you can just let me know. बहुत सारे साथियों से सखर में भी मुलाकात होगी कॉन्फ्रेंस में, उस दौरान भी अगर कोई एकेडमिक रिलेटेड सिचुएशन हो तो मैं हाजिर हूँ. If I can help you in getting something related to the exam, that will be good. Take care of yourself. Allah Hafiz. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Allah Hafiz.